મિત્રો, દિલ્હીથી લઈને પંજાબ સુધી અત્યારે એક જ ચર્ચા છે, રાઘવ ચડ્ડા. રાઘવ ચડ્ડા સાઇડલાઇન થઈ ગયા છે. જે નેતા સંસદમાં ગરજતા હતા, જેમને કેજરીવાલના હનુમાન માનવામાં આવતા હતા, આજે એમના જ મોઢા પર પાર્ટીએ તાળું મારી દીધું હોય તેવી પરિસ્થિતિ છે. રાજ્યસભામાં ડેપ્યુટી લીડર પદ છીનવાઈ ગયું અને હવે તો એવી પણ વાત સામે આવી છે કે તેમને બોલવા માટે સમય પણ ન અપાય. આખરે આવું થયું કેમ? શું આ કોઈ રાજકીય ષડયંત્ર છે કે પછી જ્યારે પાર્ટી મુસીબતમાં હતી ત્યારે રાઘવની રહસ્યમય ગેરહાજરીનો આ બદલો છે? ચાલો જાણીએ શું છે આખો મામલો. નમસ્કાર, લલકા ન્યૂઝ સાથે હું રિયા રાવ. રાઘવ ચડ્ડાની જગ્યાએ હવે અશોક મિત્તલને જવાબદારી સોંપાઈ છે. પણ સવાલ એ છે કે જવાબદારી અને પદ કોને મળ્યું? सवाल ये है कि राघव पासे थी केम छिनवायो? मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है. लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्डा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए. जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्डा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए. अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं. एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए. और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं. मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं. मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू. ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत. मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं. और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं. मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना. मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना. मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है. સૂત્રો કહે છે કે જ્યારે અરવિંદ કેજરીવાલ જેલના સળિયા પાછળ હતા, જ્યારે મનીષ સિસોદિયા અને સંજય સિંહ પર મુસીબત હતી, ત્યારે રાઘવ ચડ્ડા લંડનમાં હતા. ભલે કારણ આંખનું ઓપરેશન હોય, પણ પાર્ટીના કાર્યકરો અને નેતૃત્વને આ ટાઈમિંગ ખટકી ગયું છે. राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा. हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया. हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के. पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है. चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है. FIR दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं. सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है. उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं. पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है. वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है. अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने CEC को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया. जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं. पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो.
ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपकी जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहां से चले थे और कहां आ गए, और देश को किन चीजों की जरूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। શું રાઘવ ચડ્ડા મુસીબતના સમયે મેદાન છોડીને ભાગી ગયા હતા? આ સવાલનો જવાબ હવે પાર્ટી તેમની શક્તિઓ ઘટાડીને આપી રહી છે. સૌરભ ભારદ્વાજ ભલે આને વહીવટી પ્રક્રિયા ગણાવે, પણ રાજકારણમાં કશું જ અમથું નથી હોતું. એક તરફ સંજયસિંહ બહાર આવીને ફરી આક્રમક થયા છે, ત્યારે બીજી તરફ રાઘવ ચડ્ડાની ચૂપકીદીએ અનેક તર્ક વિતર્ક સર્જ્યા છે. આપણી સાથે ઈશુદાન ગઢવી જોડાયા છે, આપણે તેમની જોડે સીધી વાત કરીએ. ઈશુદાનભાઈ, રાઘવ ચડ્ડાને લઈને જે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે એને લઈને શું કહેશો આપ? જો એક વસ્તુ બહુ ક્લિયર છે કે સાંસદ બનાવ્યા પછી રાઘવભાઈએ જે દેશના મુદ્દાઓ ઉઠાવવાના હતા રાઘવ ચડ્ડાજી, એ ક્યાંક એમાં કાચા પડ્યા. આજે આપણે સમોસા ઉપર નહીં, દેશમાં ગેસના સિલિન્ડરોની કમી છે, હાલત બહુ ખરાબ છે, યુદ્ધની પરિસ્થિતિ, ખેડૂતોના મુદ્દાઓ છે, પંજાબના કેટલા મુદ્દાઓ છે, પંજાબના પડતર કેટલી માંગણીઓ છે, આ બધી વસ્તુઓ મૂકવાની હોય. હવે થાય શું કે માનો કે આમ આદમી પાર્ટી નાની પાર્ટી છે, એના રાજ્યસભાને એક તો ટાઈમ ઓછો મળે સાંસદોને, અને ટાઈમ ઓછો મળે એમાં જો આ જ વ્યક્તિ જો ટાઈમ ખાઈ જાય, બરોબર છે, સમોસાના મુદ્દા ઉપર, તો દેશની સાચી પરિસ્થિતિ છે એ રહી જાય. એટલા માટે થઈને પાર્ટીએ એ લાઈન લીધી છે કે ભાઈ આપણા માટે. અને બીજું કે જ્યારે વાત હતી આની લોકતંત્ર બચાવવાની, પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણીમાં જે મતદાન કરવાનું હતું ત્યારે આમણે સાઇન નથી કરી. જ્યારે વિપક્ષ વોકઆઉટ કરે છે આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદો, ત્યારે પછી પોતે બેઠા રહે છે. એટલે આ તો એક ડર પેસી ગયો એવું મને લાગે છે. એટલા કારણે એમણે આ બધી સ્થિતિઓ કરી હશે, એટલે પાર્ટીએ આ નિર્ણય લેવો પડ્યો છે. ઈશુદાનભાઈ, એમની વફાદારી ઉપર સવાલ ઊભા થયા છે કે અરવિંદ કેજરીવાલજીએ અને આખી પાર્ટીએ જે જેલમાં હતા અને કોર્ટમાં જે ચક્કર લગાવી રહ્યા હતા, ત્યારે રાઘવ ચડ્ડાજી તેમાં પણ ગેરહાજર જોવા મળ્યા હતા. એટલે ક્યાંક એમની જે વફાદારી છે તેની ઉપર પણ સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. બિલકુલ, અરવિંદ કેજરીવાલજી એક નાના વ્યક્તિને, તમે જુઓ, પેલા એને ધારાસભ્ય બનાવ્યા, ધારાસભ્ય પછી પંજાબમાં પ્રભારી બનાવ્યા, પંજાબના પ્રભારી પછી રાજ્યસભાના સાંસદ બનાવ્યા પંજાબની ચૂંટણી પછી. અને ત્યારે જ્યારે પાર્ટીની જરૂર પડી ત્યારે એમની ક્યાંક ને ક્યાંક એમાંથી એની હતી, મને એવું લાગ્યું કે ભાઈ કેટલીક જગ્યા ઉપર એમની ગેરહાજરી જોવાતી હતી, આંખે વળગતી હતી. અને એના કરતા મોટી વસ્તુ એ છે કે ચાલો એ પણ ચાલે લેવાય, પણ જયારે સાંસદ તરીકે એક મોકો માન મળતો એક પાર્ટીને, દેશના સળગતા મુદ્દાઓને અને ભાજપને જે કેન્દ્ર સરકાર છે એની સામે અવાજ ઉઠાવવાનો, જનતાનો અવાજ બનવાનો, ત્યારે એ મુદ્દાઓ ઉઠતા નહોતા, એ બહુ મોટો ઇસ્યુ થતો હતો. જે પ્રમાણે ઈશુદાનભાઈ આપ કહી રહ્યા છો કે જે તેમની ગેરહાજરી જોવા મળતી હતી, જે જ રીતે વાત કરીએ તો સંજયસિંહ જેલમાંથી બહાર આવ્યા, તરત એક્ટિવ થઈ ગયા અને ક્યાંક રાઘવ ચડ્ડા ત્યાંથી જ સાઇડલાઇન થઈ ગયા હતા. તો શું આપમાં આને લઈને આંતરિક જૂથબંધી શરૂ થઈ હોય એવું લાગી રહ્યું હતું? જૂથબંધી મેનેજ તો માણસો થતા હોય છે, એવું નથી હોતું. માણસોની દરેકની પેલી હોય છે. પણ એક વસ્તુ એટલી ચોક્કસ છે કે આ બધી બાબતોમાં
આમ આદમી પાર્ટીનું સ્ટેન્ડ ક્લિયર છે કે સામાન્ય જે લોકોની સારા હતા એને આપ્યા પછી એમણે સારા રહેવું પડે, વફાદારી રાખવી પડે, લોકોના મુદ્દા ઉઠાવવા પડે, પંજાબના મુદ્દા ઉઠાવવા પડે. અત્યારે પંજાબના કેટલાય મુદ્દાઓ સરકારના, કેન્દ્ર સરકારનો પેન્ડિંગ છે. એ મુદ્દાઓ પણ સંસદમાં ઉઠાવવામાં નથી આવતા. તો આપણે પંજાબના રાજ્યસભાના સાંસદ છીએ એટલે મને લાગે છે કે એ બાબતમાં અરવિંદજીએ વિશ્વાસ ખૂબ મૂક્યો, પણ એમાં અરવિંદજીને જેટલી આમને બધી જે રાખવી પડે વફાદારી એ રાખી શક્યા નથી એવું લાગે છે. સાથે ઈસુદાનભાઈ વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં પણ એક ચહેરા તરીકે તે જાણીતા હતા. ગુજરાતના કાર્યકર્તાઓ, આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓમાં પણ એક રાઘવ ચડ્ડાજીનો એક યુવા તરીકે ખૂબ સારો ચહેરો જોવા મળી રહ્યો હતો. તો આજે જે પ્રમાણે રાઘવ ચડ્ડાજીને જે પાર્ટીએ જે તેમના હક છીનવી, તેમના હક જે લઈ લીધેલા છે તેને લઈને ગુજરાતના કાર્યકર્તાઓ પર અસર નહીં થાય? કારણ કે આમ એવું કહેવાય કે દૂધમાંથી માખી ક્યાં લીધેલું છે? પાર્ટીએ તો સ્ટેન્ડ લીધું છે લોકોના હિત માટે. અને આમ આદમી પાર્ટીમાં હોય ત્યારે બધા લોકપ્રિય હોય છે. આમ આદમી પાર્ટી નીકળે તો આમ આદમી પાર્ટી અથવા તો વિરોધમાં જાય અથવા તો મેનેજ થાય તો એ પછી લોકોના દિલોમાંથી, કાર્યકર્તાના દિલોમાંથી પણ નીકળી જતા હોય છે. ઈસુદાનભાઈ પોતાનો જો મત પૂછીએ તો રાઘવ ચડ્ડાજીને એવી વાત હતી કે તેમને પાર્ટીમાં અકળામણ અનુભવી રહ્યા હતા. ઈસુદાન ગઢવી તરીકે તમે ખાતરી આપી શકો કે રાઘવ ચડ્ડા આગામી સમયમાં આમ આદમી પાર્ટી સાથે જ રહેશે કે પછી તેઓ કોઈ નવા રસ્તા શોધવા નહીં રહે? નહીં, નવા રસ્તા શોધવાના જ હશે ને. આમ આદમી પાર્ટી તરફ રહેવાનો હોય ને, જો મજબૂતાઈથી મુદ્દા કેન્દ્ર સરકાર સામે ઉઠાવો તો ક્યાં વાંધો જતો? એટલે એને નવા રસ્તા શોધી જ લીધા હોય ને. બિલકુલ. એટલે ક્યાંક આડકતરી રીતે કહેવાય કે હવે આમ આદમી પાર્ટી સાથેનો છેડો હવે એમનો ફાટી જશે. બિલકુલ બિલકુલ. લાગે છે ભાજપમાં જોડાય? બની શકે. બિલકુલ. ખૂબ ખૂબ આભાર ઈસુદાનભાઈ અમારી સાથે જોડાવા બદલ. थैंक यू. मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है. आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा है. आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे. आप उस पर बोलने से डर रहे हैं. हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए. बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गई. और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है. आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है. लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं. आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए? वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए? गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं? आज देश के सामने, देश के आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट एलपीजी गैस सिलेंडर का है. आप तो बड़े आदमी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हो सकता है आपको दिक्कत ना आती, लेकिन एक आम परिवार, एक छोटे से मकान में रहने वाला, एक कच्ची कॉलोनी में रहने वाला एक गैस सिलेंडर के कनेक्शन के परिवार को आज अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में दिक्कत हुई. पिता सोच रहे हैं मैं काम पर जाऊं, दिहाड़ी लेकर आऊं, या लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर गैस का सिलेंडर लेके आऊं कि कल मेरे बच्चों के लिए लंच बन सके. जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली विधानसभा में सिलेंडर का सवाल उठाया, जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया तो आप चुप रह गए. आप मोदी जी से डर गए क्या? आज इस देश में हर इंसान को यह तय करना होगा कि क्या वो मोदी जी के साथ है या वो संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ. मुझे याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, हम सब सड़कों पे खड़े होकर लड़ रहे थे. पुलिस हम पे लाठियां चढ़ा रही थी.
हमें घसीट घसीट कर पकड़ कर लेके जा रहे। दिल्ली के अलग अलग थानों में, कहीं नरेला में, कहीं बवाना में हम डिटेन हुए। हम रोज सड़कों पे लड़ रहे थे। आप तब लंदन में, आपने हमें बताया कि मेरी आंख का ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए मैं लंदन में। हमसे मीडिया ने बहुत सवाल पूछे। बार बार हमने मीडिया को कहा कि नहीं नहीं, राघव चड्ढा जी डरे नहीं हैं, उनकी आंख में प्रॉब्लम है, तो अपना ऑपरेशन करवाने हैं। लेकिन आज राघव जी, मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए तब भी आप बीजेपी से डर गए, तब भी आप मोदी जी से डर गए, क्या आप डर के लंदन भाग गए? देखिए, हो सकता है कि आप मोदी जी से डरते, हो सकता है आप जेल जाने से डरते, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम ना बीजेपी से डरते हैं, ना मोदी जी से डरते हैं, ना उनकी एजेंसी से डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं। इसलिए हम इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते आए हैं, इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते रहेंगे, इस लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते आए हैं, लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते रहेंगे। राघव जी, मोदी जी से डरने से, बीजेपी से डरने से संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। आज आपको यह तय करना है कि क्या आप संविधान के साथ हैं या मोदी जी के साथ। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है, मैं उसके संबंध में ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। શું આમ આદમી પાર્ટીમાં બે ફાટા પડી ગયા છે? શું કેજરીવાલ હવે નવા ચહેરા ઉપર ભરોસો કરી રહ્યા છે? રાઘવ ચડ્ડાનું મૌન આવનારા મોટા તોફાનોના સંકેત આપી રહ્યું છે। તો શું રાઘવ ચડ્ડાનું રાજકીય ભવિષ્ય હવે જોખમમાં છે? શું તે પાર્ટી છોડશે કે પછી મૌન રહીને યોગ્ય સમયની રાહ જોશે? આ મુદ્દે તમારું શું માનવું છે? શું રાઘવ ચડ્ડા સાથે અન્યાય થયો છે? કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને આવી જ અવનવી અપડેટ માટે લલકાર ન્યૂઝને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો।